हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। तो अगर आप बिहार स्टेट और TRE 4 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। तो इस टॉपिक से इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर लें। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोगों को एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, बोल रहा है कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स, तो कहता है ई कॉमर्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन ए है बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पर जो कुछ भी हम खरीदते हैं और बेचते हैं उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स, बोल रहा है इसमें से कौन सा आपका ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। P2P नहीं है, बाकी B2B, B2C और C2B है और बाकी ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट है B2B स्टैंड्स फॉर, तो इसके ऑप्शन ए करेक्ट है बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, B2B बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ई कॉमर्स डिजिटल प्रोडक्ट्स आर, तो ऑप्शन बी है इंटेंजिबल गुड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ EDI का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSL यूज्ड फॉर, तो इसकी ऑप्शन ए करेक्ट है इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स, तो ऑप्शन ए है अमेजॉन। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये पेमेंट मेड ऑनलाइन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं ई पेमेंट। द मेन बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इज ग्लोबल रीच। द प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन इज HTTPS। द शॉपिंग कार्ट इन ई कॉमर्स रेफर्स टू a website feature that allows users to collect products. The main limitation of e-commerce is security issues, which is not a mode of e-payment. तो ऑप्शन डी है पेपर इनवॉइस। पेपाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। द term m-commerce refers to mobile commerce. Which of the following is an advantage of e-commerce? 24/7 availability. Which language is commonly used for developing e-commerce? HTML. Click and mortar means online plus offline business model. Which is an example of C2C e-commerce? OLX. द बैकबोन ऑफ ई कॉमर्स इज, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका कैप्चा इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग बोट्स। द मोस्ट पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब डिज़ाइन इज HTML। कुकीज आर यूज टू स्टोर यूजर डाटा ऑन क्लाइंट साइड। द मेन सिक्योरिटी थ्रेट इन ई कॉमर्स इज हैकिंग। Which organization governs internet domains name? ICANN. Digital cash is electronic form of currency. Firewalls are used for, तो इसकी ऑप्शन ए करेक्ट है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए यूजर इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? प्राइवेसी इशूज। The first online transaction occurred in 1994. Amazon Commerce was founded by Jeff Bezos. The process of converting data into secret code is
encryption. Which is an example of B2B e-commerce? Alibaba. The expansion of URL is Uniform Resource Locator. The full form of HTTP is Hypertext Transfer Protocol. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Which is an example of e-banking? Net banking. Which is not a characteristic of e-commerce? Physical interaction. The domain extension of .com is used for commercial organization. Which of the following is not an e-commerce platform? Turbo C++. The software used to browse web pages is web browser. Which one is secure payment protocol? ऑप्शन ए करेक्ट है. डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एम कॉमर्स रिक्वायर्स वायर्ड नेटवर्क. द कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1970. द टर्म ई टेलिंग मीन्स रिटेलिंग थ्रू इंटरनेट. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी electronically. Which one is not a component of e-commerce? Physical store. Which of the following is a key driver of e-commerce? Internet technology. The domain name identifies the address of a website. Which payment method is most secure in e-commerce? Digital wallet. Which one of the following is an example of government to citizen? Online tax payment. The full form of DNS is domain name system. Which one is a limitation of e-commerce? Lack of trust. E-tendering means online tender submission. Which one is not an example of e-commerce website? Microsoft Word. Which type of e-commerce help customers sell to other customer? C2C. Which technology is used for online credit card and security? SSL. Which of the following is a challenge in e-commerce? Cybercrime. The website IRCTC represents G2C e-commerce. What is digital certificate? Electronic document verifying identity. The function of cookies in e-commerce is track user preferences. What does phishing means? Fraudulent attempt to obtain personal information. Which one is not an advantage of e-commerce? Limited market reach. The process of verifying a transaction's legitimacy is authentication. Which is a mobile payment application in India? Paytm. What is a Paytm gateway? Interface between merchant and bank. Who controls internet standard? W3C. What is e-wallet? A digital payment storage. Which Indian law governs e-commerce and cybercrime? IT Act 2000. Which one is used for online marketing? Option A. Which of the following is a C2B example? Option A. Freelancer selling design to company. What is the meaning of brick and mortar? Traditional business. Which protocol transfers file between computers? FTP. What does shopping cart abandonment mean? User leaves without completing purchase. Which organization provides domain name registration in India? INR registry. What does SEO means? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. SEO का पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स डाटा इंटीग्रिटी? ऑप्शन ए करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ B2G कॉमर्स? तो इसका मतलब होता है वेंडर सबमिटिंग टेंडर टू गवर्नमेंट.
which is not a digital payment method? Demand draft. The term click fraud refers to fake clicks on online ads. Which one is not a web browser? Oracle. VPN is used for secure private communication over public network. What is a reverse auction? Buyers invite sellers to bid for lowest price. What is a blog? Online journal. The most important element of e-commerce security is encryption. The commerce website use which protocol for secure communication? HTTPS. Cookies in website are stored on client's computer. Which one is an example of digital marketing? Email campaigns. Which one is used for website analyst? Google Analytics. Which is not an e-commerce security measure? Phishing. The term e-procurement means online purchasing of goods services. What is a spam? तो ऑप्शन ए करेक्ट है. द वेबसाइट मेक माई ट्रिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ B2C e-commerce. Which Indian system enables instant bank transfer via mobile? UPI. Which one is a disadvantage of e-commerce? Cyber security risk. Which one is not a payment gateway? Option D. The main purpose of e-commerce is conducting business transaction online. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस, और सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.